સુરતના પર્વત પાટિયા વિસ્તારમાં આવેલી રુદ્રમણી સોસાયટીમાં એક ગંભીર ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં એક પાલતુ શ્વાન જર્મન શેફર્ડ 7 વર્ષના બાળક પર હુમલો કરી તેને ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત કર્યો છે. બાળકને તાત્કાલિક ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. બાળકના પરિવારે આ હુમલા માટે સીધો આક્ષેપ પાલતુ શ્વાનના માલિક પર કર્યો છે કે તેમના દ્વારા શ્વાનને હુમલો કરવા માટે ઉશ્કેરવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના બાદ પરિવારે માત્ર પોલીસમાં જ નહીં પણ પાલિકા કમિશનરને પણ લેખિતમાં ફરિયાદ કરી છે. આ સાથે શ્વાનના માલિકો તરફથી કૂતરાનો આ જ રીતે ફરશે અને તમે અમારું કંઈ નહીં ઉકેલી શકો તેવી ધમકીઓ મળી હોવાના પણ ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. તો ઘટનાની નજરે જોનારે કહ્યું કે કૂતરો બાળક ઉપર હતો અને બાળક રહી રહ્યું હતું. માંડ બાળક બચ્યું છે. આ તો મોટું બાળક હતું અને અમારે તો નાના બાળકો છે. જો તેઓને કરડ્યું હોત તો તે તો મરી જાત. પીડિત બાળકના પરિવારે આ સમગ્ર મામલે પણ પૂણા પોલીસ સ્ટેશન, પાલિકા કમિશનર અને પાલિકાના આરોગ્ય અધિકારીને લેખિત અરજી કરી છે. પરિવારે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચીને તાત્કાલિક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. હવે જોવું એ રહ્યું કે તંત્ર આ મામલે શું કાર્યવાહી કરે છે. સુનિતા મનોજ ગોદારા, રહે રુક્મણી એવન્યુ, પર્વત પાટિયા, સુરતે પૂણા પોલીસ અને પાલિકા કમિશનરને કરેલી ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે 19 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ સાંજે 6 વાગ્યાની આસપાસ મારો 7 વર્ષનો દીકરો સોસાયટીમાં રમી રહ્યો હતો. તે જ સમયે અરવિંદભાઈ ગોસ્વામીની પત્નીએ તેના પાલતુ કૂતરા જર્મન શેફર્ડને મારા દીકરા પર હુમલો કરવા માટે લઈને આવ્યા હતા અને તેને જીવલેણ હુમલો કરીને ઘાયલ કર્યો હતો. આખી સોસાયટી એકઠી થઈ ગઈ હતી. મેં મારા સંબંધી સાથે લઈ અને મારા દીકરાને सूरत पर्वत पाटिया स्थित खानगी हॉस्पिटल में सारवार माटे दाखिल कराव्यो तो। मेरा नाम अग्रवाल हिमांशु है। मैं रुद्रमणी एवेन्यू में रहता हूँ। हमारे यहाँ पे कुत्ता है जर्मन शेफर्ड। उसको बहुत बार बोला है पर वो पहले भी बहुत से लोगों को काट चुका है। हमारी सोसाइटी में एक बच्चा रहता है ऋषभ नाम का। वो एक दिन अपनी साइकिल चला रहा था। हमारे ऑफिस सोसाइटी में एक ऑफिस है, उसके पीछे साइकिल चला रहा था। उतने में वो जर्मन शेफर्ड ने उसको काट लिया, साइकिल से नीचे गिरा लिया और उसके पूरी बॉडी को नाखूनों से दबोच लिया। फिर उसके पैरों से चमड़ी खा ली और फिर उसके पैरों में ना टाके लगाए गए। हम लोग वहाँ पे हम लोग खेल रहे थे, मैं और मेरे दोस्त। हम लोगों ने देखा उसको पूरा हम लोग काटते हुए। हम गए डंडे लेके। होते में वो जो ऋषभ था वो अपने आप को बचा के उसकी मम्मी और के पास चला गया। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। उसको इंजेक्शन लगाए गए, टाके पड़े पैरों में। जी, मेरा नाम सुनीता मनोज गोदारा है। मैं सोसाइटी रुद्रमणी एवेन्यू में रहती हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक सोसाइटी में एक के पास में जर्मन शेफर्ड नाम का कुत्ता है। वो बिल्कुल सेफ नहीं है। उसको कितनी बार बोला है कि ये कुत्ता हमारी सोसाइटी में नहीं चाहिए, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। वो कुत्ते को छोड़ना ही नहीं चाहिए। उससे की चीज का हादसा मेरे बच्चे के साथ में हुआ है। उसने वही खेल ही रहा था कि उसने उसको इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया है कि वो पूरे उसके टांके भी आए हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है उससे, लेकिन वो नहीं मान रही है। प्लस उसका देवर है वकील, लॉयर, उसको भी हमने बोला। पहले हमने सोसाइटी कमेटी में भी बोला, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे हैं। वो यही बोल रहे हैं कि हमें तो हमारा कुत्ता चाहिए ही चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि उनको कुत्ता हटाइए प्लीज। लेकिन हमने कमिश्नर से और पुलिस से सबसे बात की, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो बस यही रिक्वेस्ट है, उनको भी समझाया है लेकिन वो नहीं मान रहे। मेरा बच्चा पूरी तरह से एकदम हो गया है कि वो कहीं नीचे जाने के लिए भी नहीं हो रहा है, मान ही नहीं रहा है। उधर उसके अंदर डर बैठ गया। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो कुत्ता नहीं चाहिए, ताकि ये मेरे साथ हुआ है आगे फ्यूचर में किसी भी बच्चे के साथ नहीं हो। बस सुमित्रा राजपुरोहित। हम उधर बोकड़े पे बैठे हुए थे तो लड़के को कुत्ते वो साइकिल लेके पीछे गया। तभी वो कुत्ता, उसको मालूम नहीं था लड़के को कोई इधर कुत्ता है, तो वो पीछे गया तो उसको खींचा। वो तो मैंने देखा नहीं, मगर वो नीचे गिरा हुआ था और कुत्ता काट रहा था। और वो टीचर है ना ऊपर से खींच रही थी वो कुत्ते को, मगर वो छोड़ता नहीं था। फिर वो चिल्लाता था, कुत्ता भी चिल्लाता था और वो भी चिल्ला रहा था लड़का। फिर लड़का भाग, उसको छोड़ाया तभी वो भाग के हमारे पास आया। तो हमारे पास आया तभी मैं घर पे लेके आई।